Okay. Good morning, everyone. Welcome to Commodity Research Club and our live show on the Commodity Weekly Outlook. We'll cover everything related to bullion, energy, base metals, and more. So, here is how today's sessions will be structured. Like, part one will be the fundamental analysis. We'll start by discussing the key factor driving the commodity markets, focusing on the core concepts and essentials element that forms the basis of the analysis. Second part will be technical analysis. I'll be sharing my screen and more interactive experience. We'll examine charts and data to gain a practical understanding of markets and their movements. So let's start. We'll start with the gold. The summary for last week gold price movement is like gold prices dropped despite ongoing economic and geopolitical factor that could keep gold prices from falling further. But the key factor that are influencing gold prices, the first is US dollar strengthening. The revision in US GDP data has strengthened the US dollar, which has pushed gold prices down. A stronger dollar means gold may lose attractiveness and may reduce the demand. The next factor is inflation concern. The personal consumption expenditure, which is PCE price index, which is closely watched by the Federal Reserve, was rose by 0.2% month over month and 2.5% over year and year in July. So data was aligned with the market expectation. So this signals the moderate but ongoing inflation concerns in the US. The next factor is US economic data. The revised US GDP has and inflation measures has suggested that will be a resilience in the US economy. However, the expectation of the potential interest rate cut in the upcoming Federal Reserve meeting could influence gold prices in the coming weeks. So what we are looking ahead is the market outlooks, and the long term outlook for the gold remain positive, although the current momentum shows some signs of weakness. Investor may consider adding gold to their portfolio on price dips, right? Next will be the upcoming data to watch. The US job report expected this week will be the crucial in assessing the health of the US labor market. So any improvement in the job data could influence inflation expectation and potentially support the higher gold prices. Right. So that was all about the bullion. Now let's talking about crude oil. So oil prices continue to decline today, like on Monday, as investor weigh the potential increase in OPEC production starting in October against reduced output from Libya and weakening demand in China and US. So OPEC has planned to increase production by 180,000 barrel per day in October. So this move is a part of strategy to unwind some of the recent output cuts while maintaining other cuts until the end of the year 2025. So the market impact is like there are concern of rising potential increase in output. So many experts suggest that the decision to boost production may depends whether the WTI is trading whether $80 or $70. So that is very important. So next is Libya's output. The Asian Gulf Oil Company in Libya has restarted production at the up like 120,000 barrel per day for domestic use, but export are still on hold due to ongoing conflicts that have disrupted the most of the country's oil field. And next is global economic concern is also important for crude oil, like China. Manufacturing activity in China hit a 6 month low in August, raising concern about the country's economic growth and the need for potential stimulus measures. This has added pressure in global oil demand. Next is the US. US oil consumption has slowed in June at to its lowest season level, since to pandemic year 2020. Economic headwinds in the China and US are expected to challenge for the growth in the year 2025. So the outlook for crude oil will be the
First will be the OPEC response. Experts believe that if the economy keeps weakening, and OPEC might have delay ending production cuts to keep oil prices at high levels. And second, we can see the US oil rigs. The number of operating US oil rigs remained unchanged at 483 last week, according to Baker Hughes. So let's talk about base metals. In base metal, we'll take the copper price update. So the copper prices were significantly up last week despite ongoing challenges from rising inventory, weak demand in China, and strong US dollar. So we'll talk about inventories. Copper inventories in LME registered warehouses has surged by 8,700 tons, which is coming around 3,22,950 tons, which is the highest level since 5 years. And these inventories have doubled since mid-June. So this increase highlights that the ongoing weakness in demand from China, which is the world largest copper consumers. Also, the next is BHP forecast, that is mining giant. The full form is Broken Hills Proprietary. Lowered its BHP forecast has lowered the forecast for China copper demand growth to just 1 or 2% this year, citing an expected sharp drop in housing completion. So longer term outlook for copper remains, the BHP still believes that the copper is headed for severe shortage in for a long term, and much higher price we can see in for longer term in copper, driven by the global energy transition. The last would be the global surplus. The International Copper Study Group, which is the ICSG, reported a 95,000 metric ton surplus in June, up to 63,000 metric ton surplus in May. So for the first half of the year, the market showed a surplus of 4,88,000 metric tons compared to the last year 1,15,000 metric tons. So overall fundamentals look weak for base metal prices for a near term, but for a long term, we have to see the forecast and the other economic data. So this is all about the fundamental factor. We are going to come on the next part, which is where I'm going to share my charts with you all. Let me share my screen. Okay. So this is the gold chart. This is the weekly gold chart where you can see I have kept some moving averages and the indicator RSI. So the last week we have seen like there is a sideways momentum in gold prices. Our market was unable to take a breakout above 72 300 level, which has formed the major resistance here, right? But if you see overall in a chart, आप देख सकते हो कि ये एक प्राइस मोमेंटम दिखा रहा है। मैंने जो ये दो एरोज डाले हैं ये एक डाइवर्जन है। डाइवर्जन यूजुअली क्या होता है टेक्निकल लैंग्वेज में, जैसे हम यूज करते हैं, हम कोई एक रास्ते से जा रहे हैं, हम बोलते हैं कि 2 किलोमीटर बाद एक डाइवर्जन है। सो वो एक डायरेक्शन बताता है कि आगे हमें क्या डाइवर्जन आने वाला है। तो वैसे ही गोल्ड प्राइसेस में हमें एक डाइवर्जन दिखता है इंडिकेटर और प्राइस में। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है साइडवेज टू अपसाइड जा रहे हैं, पर इंडिकेटर जो आरएसआई है हमारा बता रहा है कि ये जो इंडिकेटर है प्राइसेस नीचे जाने का इंडिकेट करता है। तो इसको बोलते हैं हम इन टेक्निकल लैंग्वेज में बियरिश डाइवर्जन। सो दो मार्केट प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, पर हम देख सकते हैं कि इंडिकेटर हमारा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमें गोल्ड में एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। और यहाँ पे कंफर्मेशन भी आ रही है कि 71,665 जो 71,700 का ये जो 21 वीकली डेज का मूविंग एवरेज है उसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है अभी 71,500 के आसपास, जो एक सपोर्ट है। अगर जैसे ही 500 टूटता है, हमें देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल हमारा
70,800 आएगा, और अगर नीचे देखें तो एक 68,700 तक हमें देखने मिल सकता है थोड़ा मोमेंटम में, एक दो हफ्ते में। तो ओवरऑल इमीडिएट सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ध्यान रखिए। अपसाइड जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस आ रहा है 71,700 का आ रहा है, उसके ऊपर 72,300 का है, और डाउनसाइड अगर 71,500 ब्रेकडाउन देता है तो वी कैन सी मोर डाउनसाइड अप टू 68,700, even 66,500 levels. Okay, so we are sideways to downside in gold. We'll see the silver price. सिल्वर हम देख सकते हैं कि काफी ऊपर आने के बाद 96,000, 95,000, 97,000 से जो उसने करेक्शन दिया था वहां पे रुका था। ये 200 दिन के मूविंग एवरेज, ये जो दिख रही है ग्रीन कलर की लाइन 81,800 की, ये 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, वहां से एक बाउंस बैक लिया है। और हम देख सकते हैं डेली में इसने एक बेयरिश क्रॉसओवर किया है। बेयरिश क्रॉसओवर किसको बोलते हैं? जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को काटता है नीचे के, तो नीचे से उसे कहते हैं। जैसे ये रेड जो है, रेड लाइन मेरी 50 डीएमए है और ऊपर वाला 100 डीएमए है, तो आप देख सकते हैं नीचे 50 डीएमए आया है, इसने क्रॉस किया है, और प्राइस जो है सस्टेन करने लगे हैं 21 दिन मूविंग एवरेज पे, मतलब 85,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो चांसेस है कि नीचे 81,800 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, और सपोज 81,800 का लेवल तोड़ देता है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने का चांस है। सो वील मेंटेन आवर कॉल साइडवेज टू डाउनसाइड इन सिल्वर ऑल्सो। ठीक है, और अपसाइड हमें इमीडिएट रेसिस्टेंस मिल रहा है 85,000 का, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर जाएंगे तो ये 86,200 का है, उसके ऊपर 88,300 का है। डाउन साइड अगर हम 84,000 के नीचे देखें तो पहला सपोर्ट आ रहा है 82,400 के आसपास, फिर आ रहा है 81,800 के आसपास। ठीक है, you have to see the levels are very important। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपने जैसे देखा कि बहुत सारा बेयरिश डेटा है ना, और बहुत सारे एक्टिविटीज है जो बेयरिश डिफाइन कर रहे हैं। बट वी हैव टू सी कि ये जो मेरी ब्लू लाइन है, प्राइस एक बॉटम पे है 6,000 के नीचे, एमसीएक्स का प्राइस गया नहीं है। और इंटरनेशनल पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी ये इंटरनेशनल है, यहाँ पे भी $70 के नीचे प्राइस नहीं गया है। और जो मैंने फंडामेंटल आपको बोला था एक लाइन के ओपेक प्रोडक्शन कट इंक्रीज करे या प्रोडक्शन कट करे, वो ये चीज को ध्यान रखेगी कि प्राइसेस कौन से लेवल पे है। प्राइसेस अगर 80 पे है तो बात अलग है, वहां पे वो कुछ डिसीजंस ले सकती है, पर प्राइसेस अभी 70 पे है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ कि अभी हम यहाँ से ये कुछ हमें बियरिशनेस यहाँ पे और ज्यादा मिले। तो अगर 70 का अच्छा एक सपोर्ट है, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के लिए, उसे प्लीज आप गौर करें और उस हिसाब से अपना डिसीजन ले। अभी टेक्निकली अगर हम बात करें तो 6300 का एक मेजर रेसिस्टेंस है, और ओवरऑल पैटर्न जो यहाँ पे दिखा रहा है। पर एक चीज है कि यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया है, जो 6,000 का लेवल है। पर आप देख सकते होंगे यहाँ से जब वैली किया था तो मार्केट ने ऊपर 73,000 के आसपास अपना टॉप बनाया था, फिर वहां से करेक्शन लिया था, फिर 6,000 के आसपास बनाया, और फिर ऊपर जाके 7,000 के आसपास रुक गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है हायर लोज हायर लोअर हाइज बनाते जा रहा है, राइट। यहाँ पे इसने लिया, अब यहाँ पे रुक गया, अपसाइड ये 6700 के पास रुक गया, अब ये यहाँ पे रुक गया है अराउंड 6500 के। तो यहाँ से चांस ये हो रहा है कि हमारा जो ये बॉटम है वो टूटने का चांस ज्यादा हो रहा है। 1 2 3 4, ये फिफ्थ टाइम हो सकता है कि ये 6,000 नीचे कर दे, और जैसे ही 6,000 ब्रेक होता है तो और फंडामेंटल्स हमारे क्रूड के लिए बेरिश हो जाते हैं, तो देर इज अ चांस कि हम आगे आने वाले दिनों में 5800 लेवल्स और इवन 5600 लेवल्स देखने मिल सकता है। ऊपर साइड इमीडिएट रेसिस्टेंस आ रहा है 6300 का, उसके ऊपर आ रहा है 6490 का, फिर उसके पास आ रहा है 6560 का। ठीक है, सो वी आर एट दी
break even level where we have to eagerly wait whether this 6,000 is going to break down or we can expect any reversal. We have to wait in this crude oil. नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस के लिए एक थोड़ा पॉजिटिव पैटर्न बना रहा है, जैसे हम देख सकते हैं कि ये ऊपर जाके फिर नीचे आया है, बट एक बॉटम लेवल इसने तोड़ा नहीं है। 150 के नीचे सस्टेन नहीं किया ना, 150 के आई थिंक 160 से ही है बाउंस हो गया और सस्टेन कर रहा है 200 21 डेज मूविंग एवरेज, जो महीने का एवरेज है 176, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसे वो सपोर्ट कर रहा है, बार बार वहां पे लेवल पे आता है तो वो एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी लाता है। और अपसाइड आप बहुत जल्द 188 193 का लेवल्स तोड़ने के लिए आप देख सकते हो। 180 193 का लेवल अगर तोड़ता है तो बहुत जल्द 220 240 तक आ सकता है। और सपोज 176 के आसपास आ गया तो ये एक साइडवेज मोमेंटम अपनी कैरी करेगा। बट सितंबर मंथ है तो वी आर एक्सपेक्टिंग के लेट्स सी थोड़ा 200 के आसपास आ जाए। सो वी आर साइडवेज टू बुलिश इन नेचुरल गैस। अभी कॉपर का देखते हैं चार्ट क्या बोल रहा है। वैसे फंडामेंटल्स तो बहुत बेयरिश है फॉर अ कमिंग सेशंस, पर देखें अगर ये 800 के नीचे नहीं जा रहा है उसके बाद 792 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसकी 21 दिन की मूविंग एवरेज है। 21 दिन हमारा मंथली एवरेज होता है, उसके नीचे अगर कुछ चीज आती है तो मोमेंटम में सेलिंग या उसके ऊपर सस्टेन करती है तो मोमेंटम में बाइंग आती है। तो देख सकते हैं कि 192 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम एक आशा रख सकते हैं कि देयर विल बी अ चांस कि 816 टू 830 लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। और अगर डाउन साइड ये डाउन साइड 792 तोड़ता है तो वी कैन सी 783 एंड इवन 768 लेवल्स। तो जैसे ही क्रूड सपोर्ट के आसपास है वैसे ही कॉपर भी सपोर्ट के आसपास है, हमें वेट करना चाहिए, या तो रिवर्सल का वेट करें या फिर कंटिन्यूस बेयरिशनेस का वेट करें। सो this is all about, I'm going to stop sharing my screen, right? And thank you for joining us for this week session on commodity. We appreciate your participation and hope you have found this information valuable. Stay tuned for more updates and insights in our upcoming sessions. Have a great week ahead. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.